This is the entrance and there is क्या मातृ मंदिर a dream which is written. It's a plan which was made for this beautiful place, Auroville, and that's the 4 zone. पे आई थिंक पहले पढ़ा था इन द वीडियो यू विल सी दैट देयर इज आई डोंट नो enormous amount of flowers and हर flower के नेम के साथ she had put some feelings or emotions with that, like as you can see there is receptivity for gladulus, then there is Madagascar periwinkle and for that it is progress. पीछे था for a flower, then it was named as gratitude. So I think jitna we'll go towards the temple, we will be able to see the flowers and the emotion behind it. वन थिंग यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वैसे तो देयर इज़ अ स्पेस जहाँ पे ना फुल एक बहुत बड़ा सा लाइक देयर इज़ अ पेड़, ठीक है. एंड व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस प्लेस इज़ ये जो सारे ब्रांचेस है, मतलब वो जो है वो रूट है मेन प्लांट और वहाँ से इतना थिक ब्रांचेस निकला है फ्रॉम आउटसाइड द ट्री. I have never seen something like this. We are almost here. मातृ मंदिर जो मतलब टेम्पल जो है, we are getting the view यहीं से. The place is very beautifully decorated, plants and all, बड़े बड़े pebbles और stones से सब decorated है and we are just walking towards it. मंदिर के अंदर जाने नहीं मिलता है but we can get the overview of the full Auroville from there. That's what we heard. Let's go. Huge space, very huge space. जितनी भी मेरी आंखें जा रही है, it's never ending. जितना मैं देख रही हूँ उतना way beyond दिख रहा है. It's huge, it's calm. Definitely tourist है तो थोड़ी बहुत तो बातचीत होगी, but still it's very calm. And yes, this is all about Matru Mandir. In near future, if I get time again to come and visit this place, I'll definitely try to stay over here for a week at least, for my inner peace and to be more calm in the near future. So I'll definitely try it out. I don't know कैसे कहाँ से details मिलता है. Definitely go. जाते वक्त I will get to know about things. डन विथ द टेम्पल क्योंकि बाहर से ही देखा. उसके बाद अभी हम लोग को 2 जगह और ढूंढना है. फर्स्ट द कैफ़े एंड देन द शॉपिंग एरिया. दीज 2 प्लेसेस आर देयर. शॉपिंग एरिया ढूंढ लेते हैं, उसके बाद विल गो टू द कैफ़े.
करते हुए, सारे कैमरास को अपने बैग में लेते हुए, ये रही मैं। ओह माय गॉड, फाइनली मेरे को फुल मिरर मिला अपने आप को देखने के लिए। Done with Auroville, and now we are heading towards Serenity beach. Yep. Finally we are at Serenity beach. Definitely very different from Rock Beach.